Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will be taking causes of disequilibrium in balance of payment. Last class we had dealt with the concept of balance of trade and balance of payment, and we had also taken about balance of payment on current account and capital account. Today we will be dealing causes of disequilibrium in balance of payment, that is types of balance of payment and causes of imbalance in balance of payment. Okay, shall we start? See, this is the book I am referring about, Dr. Sri S.R. Javale. So here some of the causes have been discussed about here. What are the causes of disequilibrium in balance of payment? And in other book, Dr. Shri Deepa Dani and Dr. Shri Shaila Diaz, even they have discussed about what are the causes of disequilibrium in balance of payment. So both the books I am referring here, and I will discuss what are the causes of disequilibrium in balance of payment. Okay, shall we start here? So we will see the causes. According to here, in the terms of accounting, the balance sheet is always balance. अभी balance sheet में आप देखेंगे कि कुछ भी रहो वो बैलेंस ही रहता है. बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस. अकाउंट्स में आप देखते हैं बैलेंस शीट कभी भी बैलेंस में ही रहती है. गिविंग एंड रिसीविंग एक्सपेंसेस एंड इनकम आर सेम इफ ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओरली. ओरली आप जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, गिविंग रिसीविंग एक्सपेंसेस इनकम्स सब सेम ही दिखाते हैं. इसीलिए बोलते हैं बैलेंस इज ऑलवेज बैलेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, but when we talk about the imbalance of the balance of payment, we are not talking about the whole balance of payment, but our thinking is limited to certain part of the balance of payment. See, when the balance is established by importing and exporting gold, it is only a calculated equilibrium. सी एक सिर्फ एक कैलकुलेशन है. यहाँ पे बैलेंस एक सिर्फ एक कैलकुलेशन है. कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ गोल्ड, सिर्फ एक कैलकुलेशन के माध्यम से इक्विलिब्रियम हुआ है कि नहीं हुआ वो देखते हैं. सो ऑलवेज द बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस. अभी कॉजेस क्या है? द रियलिटी इज नॉट अंडरस्टूड. इन दिस सेंस द बैलेंस ऑफ टोटल पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड एंड बैलेंस, बट देर इज एन इंटरनल इम्बैलेंस. टोटल पेमेंट तो अभी एस्टैब्लिश हो गया है बैलेंस का, बट उसमें क्या है, उसमें थोड़ी मालूम पड़ता है कि इम्बैलेंस किधर हो रहा है. वो तो एक इंटरनल इम्बैलेंस है. सो देयरफॉर नो आइडिया कैन बी इमेजिन अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस और स्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ एनी कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वालिटी इन टोटल गिविंग एंड टेकिंग. सो कोई भी कंट्री ये उसकी स्टेबिलिटी फेस के ऊपर नहीं दिखाएगी कि अकाउंटिंग में है कहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है. सिर्फ वहाँ पे तो गिविंग एंड टेकिंग हो रहा है. तो द सिम्टम्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस आर सीन इन द बैलेंस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग. So the balance is risky if two sides of transactions are moving gold to maintain balance, having to draw on the country's reserves abroad, or have to take short-term and long-term loans, and the balance is in its deceptive because it is not always possible to use this solution. Okay. से अभी यहाँ पे क्या बोला है? द बैलेंस इज रिस्की इफ टू साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मूविंग गोल्ड टू मेंटेन बैलेंस. अभी बैलेंस ये रिस्की हो जाता है जब दो साइड के ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं आपस में गोल्ड में, तो उसको मेंटेन करने के लिए तो वो रिस्की हो जाता है. तो हैविंग टू ड्रॉ ऑन द कंट्रीज रिजर्व्स अब्रॉड और हैव टू टेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, एंड द बैलेंस इज in its deceptive because it is not always possible to use this solution. ये solution सारा दिन maintain नहीं होगा. तो the state of equilibrium indicates that there is a serious imbalance in the economy of the country and the measures need to be taken to reduce it by reducing imports and increasing export. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? The state of equilibrium indicates that there is a serious imbalance in economy. तो अभी ये इक्विलिब्रियम जो है ये दिखाता है कि ये इम्बैलेंस हो रहा है इकोनॉमी में, कंट्री में इम्बैलेंस हो रहा है. तो अभी क्या मेजर्स, व्हाट मेजर्स आर नीडेड टू बी टेकन टू रिड्यूस इट? क्या मेजर्स लेना चाहिए उसको रिडक्शन करने के लिए? तो रिड्यूस इम्पोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट.
So in short, since imbalance exists within equilibrium, to understand the real economic situation of a country, one has to take into account the meaning of imbalance within the balance of payment and take care of it strategically. See, when the debt of a country is so much more that its debt that it has to pay a large amount of gold or borrow a large amount from a fund kept abroad or borrow from a foreigner, that the balance of payment is said to be unfavorable to the country. अभी डेट है कंट्री के ऊपर इतना सारा, तो डेट इट हैज़ टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, या तो गोल्ड देना है या फिर आप लोन लो, बोरो ए लार्ज अमाउंट फ्रॉम ए फंड केप्ट अब्रॉड, जो आपका अब्रॉड में कुछ फंड है उसको बोरो करो या फिर दूसरे कंट्री से बोरो करो फ्रॉम ए फॉरेनर, देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी अनफेवरेबल टू द कंट्री. आप डेट तो क्लियर कर लेंगे लेकिन कंडीशन क्या होगा, इट इज अनफेवरेबल टू द कंट्री. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज अनफेवरेबल, क्योंकि डेट लिया है, लोन लिया है, डेट क्लियर करने के लिए आपने लोन लिया है, बोरो किया है, तो इट इज अनफेवरेबल टू द कंट्री. सी इफ द इनकम इज लो एंड द इनकम इज हाई, द ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी आइदर फेवरेबल और मोर फेवरेबल. अगर इनकम आपकी लो है कंट्री की या इनकम हाई है तो ट्रांजैक्शंस को क्या बोलेंगे, आइदर वो फेवरेबल है या मोर फेवरेबल है. ओके, सो इन द साइन लैंग्वेज द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंटेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस. अभी साइन लैंग्वेज में क्या है यहाँ पे देखते हैं. द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंटेड फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन. B is equal to RF minus PF. B is equal to balance of payment. RF is equal to total foreign income. PF is equal to total dues to be paid to the foreigners. Okay. So if B is equal to 0 or RF minus PF is equal to 0, then the country is in equilibrium. Okay. So balance 0 है, total foreign income minus total dues to be paid to the foreign 0 है, तो country का balance of payment क्या है, equilibrium में with the transactions. And if total foreign income is more than the total dues to be paid to the foreigners, then balance is positive, then the balance of country is favorable. Okay. Also, if total foreign income is less than total dues paid to foreigners, then B is negative and the balance of the country is unfavorable for a country. क्या यहाँ पे balance है, so it is unfavorable for the country. See, when a country's balance of payment is favorable, it is known as a country with a surplus. अगर country का balance of payment favorable है तो country क्या कहलाएगी, surplus country है. And when country's balance of payment is deficit, it is known as country with a surplus. When a country's balance of payment is deficient, it is known as country with a surplus. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएंट है, कम है, तो भी क्या कहेंगे, कंट्री विथ अ सरप्लस. ओके, सो वन थिंग टू नोट हियर इज दैट द अबव एनालिसिस ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेट्स टू सर्टन ग्रुप्स और मैटर, इट डज नॉट मैटर. See, this is because of the fact that the double entry bookkeeping system of accounting has always kept it in balance. So डबल एंट्री बुक कीपिंग जो रहता है वो अकाउंट को सारा दिन वह बैलेंस में ही रखता है. दैट इज देयर इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस. टू पुट इट ब्लंटली, इफ द करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल देन द बैलेंस इज ट्रांजैक्टेड. But if the current account balance is higher and the surplus is on the import and export, then the balance is created by the surplus in the capital account. Okay? See, balance of payment is carefully created because in such a situation, it has a bad effect on economic condition of the country. That is, although the balance of payment is balanced in term of accounting, in reality it is unbalanced. अभी अकाउंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट सारा दिन वो बैलेंस ही दिखाएगा, बट इन रियलिटी it is unbalanced. In such a situation, the country has to take some measure, for example, increasing export or reducing import. If left unmanaged, they can be left astray and lose the right path. अभी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करो और इम्पोर्ट को रिड्यूस करो
तो अगर वो छोड़ देंगे ऐसे ही, अगर वो अनमैनेज होगा, वो मैनेज ही नहीं होगा, तो क्या होगा, जो रास्ता है वो भटक जाएंगे. तो conversely, when the income side of the current account is higher than the expenditure side, the transaction is in excess and such a transaction is said to be favorable to the country. Okay? See, there are two types of components in the balance of payment, autonomous and induced. Autonomous components include import and exports of goods. See, अभी ये देखिए, autonomous components क्या include होता है, import and export of goods and trade of services, hence they are called as real element. Autonomous components, import and export of goods, trade of services, उसको real element बोलेंगे. Next point we'll see. If there is any imbalance between the autonomous elements, then foreign exchange reserves and short-term capital movement will be created accordingly. अभी autonomous elements, foreign exchange reserves, short capital movements imbalance है, that will be created accordingly. Similarly, some induced factors are activated in the capital account to create balance in the balance of payments. These induced factor will include short-term movements, movements of gold, increase or decrease in foreign exchange reserves, etc. Induced factors are compensatory. The imbalance between them is not very significant. The real problem of imbalance in the country is in the case of autonomous element, according to the Professor Ellsworth. That is, the imbalance in the balance of payment is the imbalance in the current account. उनके हिसाब से, एल्सवर्थ के हिसाब से. Okay, when the pay for autonomous components are more than their due, the deficit and the arrival of autonomous components exceed their due, creating an imbalance. Okay, अगर आपका पे ज़्यादा है, ड्यूज से भी आपका पे ज़्यादा है, तो क्या होगा, देयर इज अ इम्बैलेंस. एज द एक्सटर्नल कैपिटल पोजिशन ऑफ ए कंट्री बिकम स्ट्रॉन्गर और वीकर ड्यू टू द इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स intensity can be measured by the effect of imbalance in the balance of payment. Okay, so we will see what are the other causes here. We will discuss here other causes of disequilibrium in balance of payment. So the balance of payment of a country is said to be in equilibrium when the demand for foreign exchange is exactly equivalent to the supply of it. In other words, the receipts equal payments. Equilibrium in the balance of payment is a sign of soundness of a country's economy. Disequilibrium in balance of payment is when either surplus or deficit is seen in it. There will be a deficit in balance of payments when the demand for foreign exchange is more than its supply. And there will be surplus when the supply of foreign exchange exceeds the demand for it. Okay? These are some of the factors that cause disequilibrium in balance of payment are numerous. The various causes may be broadly classified into economic factor, political factor, sociological factor and other factor. Now we will see what are the economics factor. There are number of economic factors which may cause disequilibrium in balance of payments. Economic factors such as inflationary situations. Economic factor, inflationary situation यानी महंगाई हो गई. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द इकोनॉमी, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया है इकोनॉमी में, यानी कंट्री वालों ने कुछ प्रोजेक्ट लिया है ऐसे, उसमें एक्सपोर्ट की चीज़ें ही आ रही है, सो देयर इज़ अ डिसइक्विलिब्रियम. चेंज इन नेशनल इनकम, नोटबंदी में आप देखेंगे नेशनल इनकम ही बदल गई है, लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. दिस फैक्टर आर डिस्कस एंड अंडर. नाउ वी विल सी व्हाट आर द अदर फैक्टर्स हियर. First is development disequilibrium. Large scale development expenditure usually increase the purchase power. अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे कंट्री के लिए तो एक्सपेंडिचर तो होने वाला ही है, तो परचेजिंग पावर भी होगा नेशनल इनकम में. सो इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड देन द प्राइजेस.
ओके, सो उसमें क्या होगा, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड होगा, प्राइजेस हाइक होगा. सो दिस ऑल्सो रिजल्ट इन सब्सटैंशियली लार्ज इम्पोर्ट्स. तो उसमें क्या होगा, पेमेंट आपको तो देना पड़ेगा, तो फिर लार्ज इम्पोर्ट लगेगा अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो. सो डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम इज कॉमन इन द केस ऑफ डेवलपिंग नेशंस बिकॉज द लार्ज स्केल इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स नीडेड फॉर कैरिंग आउट वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लीड टू डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अभी डेवलपिंग नेशंस के लिए तो लार्ज स्केल में अगर इम्पोर्ट चाहिए तो कैपिटल गुड्स नीडेड फॉर कैरिंग आउट वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए तो इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है. तो उसमें क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट आता है. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड नेक्स्ट इज cyclic disequilibrium. See, one of the major reason for disequilibrium in balance of payment is the occurrence of cyclic fluctuation. अभी cyclic fluctuations क्या होता है? So, according to Lawrence, W. Tolle points out क्या करते हैं, depressions always brings about a drastic shrinkage in world trade. अभी जिस कंट्री में ज़्यादा डिप्रेशन होगा तो वो क्या होगा, देर इज़ अ श्रिंकेज, ड्रास्टिक श्रिंकेज आ जाता है उस कंट्री में, वर्ल्ड ट्रेड में. तो वहाँ पे डिप्रेशन से क्या होता है, तो इंपोर्ट ज़्यादा होता है उस कंट्री में, एक्सपोर्ट कम होता है. सो ऑन अदर हैंड प्रॉस्पेरिटी स्टिमुलेट द ट्रेड. प्रॉस्पेरिटी जिस कंट्री में होता है तो क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी यानी जो पैसा ज़्यादा उस कंट्री में क्या होता है, ट्रेडिंग ज़्यादा होती है. सो फॉर एग्जाम्पल, ए कंट्री एंजॉइंग ए बूम all by itself with ordinary witnesses a more rapid growth in its import than its export. ओके, अभी बूम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सो यहाँ पे जो कंट्री जो बहुत पैसा होता है उस कंट्री में, तो ही इज़ एन्जॉइंग ऑल द टाइप ऑफ इम्पोर्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट होगा वो. तो आपके पास अगर पैसा होगा तो क्या करेंगे आप, सो एंजॉइंग ए बूम, सो ज़्यादा से ज़्यादा आप माल की खरीदारी करेंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इम्पोर्ट वापस ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट होगा. सो वाइल द ऑपोजिट विल बी ट्रू फॉर ऑफ द अदर कंट्री, तो अदर कंट्री में उसका ऑपोजिट होगा, बट द प्रोडक्शन इन अदर कंट्री विल बी एक्टिवेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द फॉर्मर कंट्री. बट दूसरी कंट्री जो आपको इम्पोर्ट कर रही है उसके लिए तो वो एक्सपोर्ट होगा, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी वो कंट्री. Okay, so there is a cyclic disequilibrium. So one of the another cause for the disequilibrium in balance of payment is cyclic disequilibrium. So on other hand, if the business partner of a country, like example USA, experience depression, the business in the home country, example India, is likely to be affected because there may be a fall in the goods demanded by those country, and hence the export of the home country will suffer. अगर बिजनेस कंट्री अभी यूएसए एक्सपीरियंस है डिप्रेशन में, अगर कुछ कंट्री डिप्रेशन में है उनके लोग वहाँ पे, तो अभी जो इंडिया में जो कंट्री है वो तो अफेक्ट होने वाली है, क्योंकि जो गुड्स यूएसए से आने वाला है तो अभी इंडिया को सप्लाई नहीं होगा. ओके, तो देयर विल बी अ फॉल इन द गुड्स डिमांडेड बाय दोस कंट्री, सो हेंस द एक्सपोर्ट ऑफ द होम कंट्री विल सफ़र. अभी जो एक्सपोर्ट करना भी है तो नहीं कर पाते हैं. Besides this, there will also be a fall in the investment of intra-firm transfer. Okay. Now next we will see third is secular disequilibrium. Now we will see what is secular disequilibrium. Sometimes balance of payments disequilibrium is of secular nature, that is, it persists for long period due to secular and long run trends operating in the economy. For example, in a developed country, the disposable income is generally very high. Okay, hence aggregated demand is high. At the same time, the cost of production is very high due to the higher wages. Okay, as a result the prices are high. Thus these two factors, high aggregate demand and higher domestic price, may result in higher import than their export. So in developing country there is a persistent growth in the population. अभी सेक्युलर जब भी ग्रोथ होगा पॉपुलेशन में डेवलपिंग कंट्रीज में, दिस लीड टू हाई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट रिजल्ट इन हायर इम्पोर्ट्स. सो वन ऑफ द सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम एग्जाम्पल ब्यूटीफुल यहाँ पे दिया है. सो व्हेन देयर इज अ
ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, उसमें अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हाई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो होगा ही है, तो उसमें इट रिजल्ट क्या होगा, हाइयर इम्पोर्ट होगा. फर्दर डेवलपिंग कंट्रीज हैव ए लो कैपेसिटी टू सेव ड्यू टू लो डिस्पोजेबल इनकम. डेवलपिंग कंट्रीज में लो कैपेसिटी होती है सेविंग में, क्योंकि इनकम ही लो है वहाँ पे. एट द सेम टाइम दे रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस. उस कंट्री को डेवलप करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट. So consequently it leads to a high input of capital machinery and other inputs. So other inputs capital high inputs of capital machinery उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिस कंट्री में ज़्यादा ग्रोथ है पॉपुलेशन की, तो इंपोर्ट उसका ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा. डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी. सो दिस इज सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम. So this period is called a long period due to secular and long run trends operating in the economy. Okay, so next we will see what is structural disequilibrium. Disequilibrium in balance of payment can be two structural changes. Such structural changes can be development of alternative sources of supply, development of better substitutes for export, and exhaustions of productive resources, changes in transport cost, routes, etc. For example, with increasing demonstration effect, the pattern of demand for goods is changing the consumption pattern of the Western economy. This leads to decline in the demand for traditional export. Okay? यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम. स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? सी, it is not possible that India export will decline at the same time import will remain the same. There will be imbalance in balance of trade. I can tell you structural imbalance. See, for the structural imbalance, suppose demand for jute goods of India's in abroad decreases, then India will have to shift its industrial equipment to other export industries. अगर इंडिया जो गुड्स तैयार कर रहा है जूट के बारे में, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा और चाइना की कंट्री वो उसको प्रोड्यूस करके और चीपर में बेच रही है, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? It has to shift its industrial equipment to other export industries. So, though India's export will decline and the same time import will remain same. तो export तो कम हो जाएगा, import same का same रहेगा. So, there will be an imbalance in balance of trade. So, that imbalance is called as a structural imbalance. Okay? So, here structural imbalance. This is called a structural imbalance. Now, capital movement, next we will see capital movement. Capital movements occurring on a large scale can lead to imbalance in balance of payment. A massive inflow of foreign capital into a country is followed by an unfavorable balance of payment. A large outflow of capital, on the other hand, is accompanied by a favorable balance of payment. Okay, so this is capital movement. Now next we will see inflationary condition. An inflationary rise in prices within the country may also produce imbalances in BOP. जब महंगाई बढ़ जाती है कंट्री में, so there is also imbalance in balance of payment. The price of export item may go up, causing a fall in the volume of export from the country concerned. तो जैसे prices up हो जाते हैं तो एक्सपोर्ट की जो आइटम है वो रिडक्शन हो जाती है उसमें, कॉजिंग ए फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट. जो जितना एक्सपोर्ट वॉल्यूम जाता है उसमें कम जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशनरी राइज हुआ, यानी महंगाई ज़्यादा हो गई है. तो सामने वाली कंट्री क्या देखता है, इस कंट्री में महंगाई ज़्यादा है, तो दे विल नॉट बाई द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंट्री कंसर्न कंट्री.
The inflationary spiral within the country may result in increase in the volume of import. तो import तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें क्या होता है, export कम हो जाता है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है. So this is economic factor. Now we will see what are the political factor here. Here political factor is certain political factor could also cause balance of payments disequilibrium. See, a country belonged with a political instability result in disrupting the productivity within the country, causing a fall in the export and increasing in import. Political instability causes large capital outflows and inadequate of domestic investment and production. अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, अभी रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री, कॉजिंग अ फॉल इन द एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन इम्पोर्ट. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज ए लार्ज कैपिटल फ्लो. जहाँ पे पॉलिटिकल की इंस्टेबिलिटी है तो वहाँ पे लार्ज कैपिटल आउटफ्लो होता है एंड इनएडुकेट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. डोमेस्टिक में इन्वेस्टमेंट कम होता है. So a payment of war जहाँ पे रहता है, reparation can also cause a disequilibrium in the nations of balance of payment. Okay, war with a neighboring country or even elsewhere can have a repercussion on the home country. It would lead to a fall in demand for the home country's export. So अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है नेबरिंग कंट्रीज, सो देर इज़ अ रिपोक्रेशन जो होम कंट्री में होता है, रिपोक्रेशन होता है. देर वुड बी ए फॉल इन द डिमांड फॉर द होम कंट्रीज एक्सपोर्ट. चेंजेस और क्लोजर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड रूट कैन हैव सीरियस implications. So thus factor like war or change in world trade routes could also produce similar difficulties, disequilibrium, imbalance of payments. Okay, see, this is a political factor. Now what are the social factor? We will see what are the social factor. Social factor is here. Certain social factors influence balance of payments. For example, चेंजेस इन टेस्ट ये सोशल है. जैसे टेस्ट में चेंज होता है, खान पान में चेंज होता है, प्रेफरेंसेस है एंड अदर फैशंस है. अभी फैशंस है तो जैसे फॉरेनर के गुड्स पहनते हैं फैशंस में, टेस्ट में जो फॉरेन के खाना रहता है तो उसमें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम होता है. डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा may affect imports and export and influence the balance of payment. See, for example, the invention of synthetic rubber lead to serious decline in export of natural rubber, okay, from countries like Malaysia, Burma, etc. during and after the Second World War. So there is a balance, there is a imbalances. The other factors क्या है, natural calamities है such as chronic poor weather condition influence balance of payments है. Say for example, developing countries that depend on export or agricultural goods and natural calamities lead to substantial fall in export, that is rise in import, causing disequilibrium in balance of payment. अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डिपेंड होती है एक्सपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड नेचुरल कैलामिटीज़. वो नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होती है, जैसे फ्लड आ गया, ये आ गया, तो उसमें सब्सटेंशियल फॉल इन एक्सपोर्ट होता है एंड राइज इन इम्पोर्ट हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग ए डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. फर्दर मेजर नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक और साइक्लोन दो brings inflow of aid in the short run but leads to disequilibrium in balance of payment in long run in terms of debt servicing. Natural calamities not only disrupt the agriculture production, natural calamities जो आती है वो agriculture production को ना तो वो disrupt करती है but also of industrial sector. The industrial sector depend for its raw material on agriculture sector. अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. सी व्हेन प्रोडक्शन फॉल्स एक्सपोर्ट फॉल्स एंड इंपोर्ट डिक्लाइन. अभी प्रोडक्शन फॉल हो गया, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो एक्सपोर्ट अपने आप फॉल हो जाएगा एंड इंपोर्ट भी डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि पैसा ही नहीं है वहाँ पे. सी सम ऑफ द मेजर इट हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो इट हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर. So I have referred these causes of disequilibrium in balance of payment from the book Dr. Shri Deepa Dani.
So these are the causes of disequilibrium. And next we will see types of balance of payment. See, what are the types of balance of payment here? It has been discussed. Already I had discussed here what is balance of payment. In the last video, balance of trade also, features also I had discussed. Now we will be discussing in other video types of balance of payment. Okay, I'll just end this video.